authentication, another A for authorizations, and the last A for accounting. So it provides three things, three services under this server, that is authorizations, authentications, authorization, and accounting. And email server, like it will be used for this sending and receiving an email. And for sending and receiving a file, we'll use the FTP server. FTP services. So we have to configure all these three parts. You can look at the objective. And now let's move ahead with this scenario. Authentication and authorization are distinct security process in the world of identity and access management, that is IAM. So authentication uses password and other identification method to confirm that user are who they say they are. So authentication, when you go for it, so basically it will look for the username and password, ID and all. By contrast, authorization assign user permission to the resources that the user is allowed access. Like what are the resources that particular user has been allowed? Like you are normal user, so you have been restricted with some resources. If you are an admin user, if you are an admin, so you have the multiple resources access. Right. So that is the part like consider under this authorizations. And authentication is just like checking the user and password correctly user is entering or not. And authorizing that, particular assigned resources, which users would be allowed to access which type of resources. That can be done under the authorizations. And in this packet tracer activity, you will configure the authentication and authorization for the network services, including wireless network access, email and FTP services. Right. So accounting is just like it's a kind of track for the user activities and what kind of resources that user can use, and how much bill will be generated, and how the security service will be monitored from the backend, right? So all this thing that can be done through this accounting. So there are three things that will be used in AAA server: authentications, authorization, and accounting. Okay. So make sure that when you track the user activities, uh, what are the resources the user is using, and how much bill will be generated, and how the security will be monitored from the backend. Security monitoring, and that can be done with the rules of the user permissions, right? So this is the part of your accounting, right? And authorization you have understood, like which user has been allowed for which type of resources that has been, what kind of permissions that has been given to that particular user. And authentications is just about that user name and password. So I hope it's clear to all about the AAA server. So make sure that you should know all the meaning of all AAA in the AAA server. Now we can configure the AAA authentication credential. तो authentication credential मतलब user and password, है ना? जब हम authentication की बात करेंगे तो यूजर नेम पासवर्ड हम क्रिएट करेंगे या सेटअप करेंगे यूजर के लिए. जब ऑथराइजेशन की बात हम करेंगे तो उसमें रिसोर्सेस किस टाइप के यूजर को क्या रिसोर्सेस एलोकेट करना है उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे और उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे. So let's navigate to headquarter and then you can go for the wiring process. Request button, this one. And we have to, configure the user account on AAA server, right? So our goal is to create a user account on AAA site, AAA server. So you have to first navigate to this headquarter, and then you can go to the wiring process, which is a tall black server. This is in the bottom left corner. So this is your basically they are talking about tall and black server. This is wiring process. All right. So navigate to this, click on the wiring process, which is the tall black server at bottom left corner. That is this one they're talking about, wiring closet, right?
And here on the right side rack, can I see this is the right side rack. Like this rack they are talking about, right side rack. You have to just go to AAA Radius server. This is they are talking about AAA Radius server. And under this, if you open it, just click on services. Right under the services, you can turn on AAA. There is a AAA server, right? So the services just you have make it on. So on कर दो. And under the user setup, add the following user and password. The user one को जो है क्या पासवर्ड दोगे वो डिटेल यहाँ पे ऐड करना होगा तुमको. This for the user one. The password is pass user one. ये वाला पासवर्ड डाल दो. ऐड करो. Say user two. Second one डाल दो. And the pass user two. Right. Let's add this. So we have added this both the user one and user two, pass user one and the pass user two. Now we can configure the wireless authentication on headquarter laptop one. So this is particularly Radius server that we did it. Now we have to navigate back to headquarter and just click on laptop one headquarter. You can close this. So by default it will be saved. तो जो है हम लोग को भी बैक जाना है और हेडक्वार्टर लैपटॉप वन को क्लिक करो. It is located 2 rooms to right from the wiring classes. तो ये इसमें है headquarter laptop ये वाला है headquarter laptop one, and it is located that we have seen it, and it is located right that we got it, and then click config tab, and then under interface just go for wireless 0. and we have wireless 0 हमारा. इसमें SSID बॉक्स को चेंज करना है. इसका टाइप हेडक्वार्टर INT डाल. Stop. And in the authentication area, you can click that WPF2. There you can enter that user ID password. So in user ID box, you can enter user one. Password is pass user one. Enter it and password, enter it. That's done. Now the next part is that you have to configure IP configuration section. In the IP configuration, you have to just go to DSCP and for a few moments for the DSCP offer the accepted the verify headquarter address IP address and assign with the address of this. So you have to check this IP should be assigned. So just go to IP config under the desktop and just click on DSCP to accept this range of IP is coming in this network 192.168.50.0 network.
So 50.4, that is fine. It is in the same network only, right? We did it. So here you can see it may be necessary to toggle between static and dynamic. That we did it already. So you don't have to do anything else. The packet is a convey setting. Okay. That same thing I have to do it for the laptop 2 as well. So everything is configured correctly. Then you can proceed with the configuration laptop 2, and then return to laptop 1 and check the IP configuration. This is typical result. That's fine. Just to go to the laptop 2. This one done. You can close. सेकंड लैपटॉप किधर है देखना होगा मे बी ये वाला हो सकता है देखो हेडक्वार्टर लैपटॉप को यस दैट इज करेक्ट now this is you have to repeat the previous step to configure the wireless setting for headquarter laptop 2 using the user 2 credential. You can verify headquarter laptop 2 receive IP address and assign an address in this network. So this is for like you can go ahead with the previous step. Only user 2 credential. I mean the password will be like pass user 2 and exclamations hope so. So just check with that. +0. Right, and default just change the name. Here SSID box just write HQ and T quarter in. Right, and in the authentication part you can write the user it will go to WPA2. So username is user2. This is for user2, and then password is not valid. Password we have not entered it. Just change to 2 pass user2. This one should be 2. Just type change that. Rest of the things will be as it is, and you can configure this DHCP. You can check with that here, or either you can go with the physical connection desktop and IP con. So anyway you can proceed. यहाँ से कर सकते हो या से कर सकते हो. मैं लैपटॉप ऑन का भी एक बार वेरीफाई कर लूंगा तो ठीक है. 150 डॉट अरे ये तो सेम आईपी आ रहा है उसका भी 50.4 आया था ना. लेट मी चेक. इसको क्लोज कर दो. ये हो गया तो क्लोज कर देते हैं. लैपटॉप वन को ओपन करो. कैन गो टू कॉन्फिग वायरलेस 0. अच्छा 50.3 था ठीक है. 50.3 ठीक है. और 50.4 है या 50.3 है करेक्ट. Now you can go to the step number 3 done. Now we can move to the part 2. We can move ahead with the part 2 and we can configure and use email services. So in this case you have to move ahead with the email services. So you need to navigate to wiring closet, and on the right side you'll find the email server. So just go to the just here go to wiring closet, and on the right side you'll see there will be an email server or mail server. So just click there. Just click on services tab and then email.
Here you can see email. Right. Email is fine. Now you can turn on the button of SMTP and POP3 both. So just make it on POP3 and SMTP on. And you can set the domain here. Copy and paste. Under user setup, there are the following username and password here. So here you can set up the users following username and password. So this is a headquarter user one. Cisco 123 comes in this way. Just to connect with them. Just add this. Then you can add the user 2 as well. To this password. Just add all users. BR user 1, headquarter user 1, 2, and so on. There will be some space in between. Sure that there's been no space. Right. This one you can remove. Right. That's done. Now we can move to the second step where we have to configure email client. That's done. So you have to navigate to headquarter. You can close this after doing all the steps. Now navigate back to headquarter and click PC1. Just to go to headquarter and just go to the PC1. See in the bottom corner. There is PC1. With this one, just check it. See, I hope PC11 is this one. And then you can go to the desktop and configure email. Just click on email and you can configure the mail. So you can enter the following details here. So your name will be TKY
Then, email address, just type this. Just do a config and mail an email for the clients. An incoming outgoing mail, just you can write mail.cyberhq.com. This is for incoming and outgoing mail server. Name, just write it headquarter user amount. So 123 actually. Just enter it, all the details. After entering, after configuring this email client, you can save this. This done. So we did for this PC11. Use the following information in the table to configure the email setting for 23 headquarter, 23 headquarter left over, and net admin. The PC23 is the office below the conference room. The net admin PC is in the wiring closet. देखो ये सेम चीज जो है ना बाकी और डिवाइस पे भी कॉन्फ़िगर करना होगा तुम लोग को अभी जो किए हो है ना। तो अभी तुम लोग को 23 जो है पीसी उसको ढूंढने का। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है सर। यस टेल मी। हाँ सर, क्वेश्चन ये है कि सर हम लोग जब सारे डिवाइसेस में कर रहे हैं तो इनकमिंग और आउटगोइंग का जो ईमेल सर्वर है वो तो हम mail.cyberhq.com वो कर रहे हैं, मतलब कि इनिशियली जो सारा मेल आ रहा है मतलब वो पहले उनके सर्वर में आ रहा है, फिर उसके बाद हम लोग के इंटरनेट के थ्रू हमारे पीसी में आएगा, राइट? या लैपटॉप में आएगा इंटरनेट के यस यस थ्रू? वो ईमेल सर्वर में पहले आएगा तुम्हारा मेल डॉट साइबर एच क्यू हाँ। डॉट कॉम कर रहे हो ना। तो वो ईमेल सर्वर एक अच्छा काम सर। करता है बैकएंड में। हाँ हाँ। उससे वो क्लाइंट का जितना डिटेल है ना उस पर तुम ये करोगे मतलब अपलोड करोगे। तो उससे क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा कि किसको कहाँ से किसको भेजना है। तो हर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं उसके डाटाबेस में हम क्रिएट कर दे रहे हैं कि और कौन कौन सा क्लाइंट का क्या जैसे तुम सपोज अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हो जीमेल बनाते हो अकाउंट राइट। तो जब साइन अप करते हो तो क्या है तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड ये सारे डिटेल्स उसका एक यूजर में ऐड हो जाता है मतलब यस कितने सर। लोग अभी तक ईमेल अकाउंट गूगल अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। तो ये जो है गूगल को पता है मतलब ओवरऑल अभी तक कितने लोगों ने जीमेल अकाउंट बना चुका है। तो उसके बाद सारे डिटेल हैं जी हमें नहीं पता वी डोंट नो अबाउट दैट। वी नो ओनली आवर अकाउंट इज इन जीमेल। वी हैव अ जीमेल अकाउंट ये याहू अकाउंट वी हैव राइट। बट दे शुड नो लाइक जो आर सर्विस प्रोवाइडर जैसे तो हम लोग जीमेल को यूज कर रहे हैं। तो यस सर। जीमेल को पता होना चाहिए गूगल को पता होना चाहिए कि आपको कितने सारे यूजर को इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड में कितने अकाउंट को उसने सर्विसेज दे रखा है कितने अकाउंट अभी तक क्रिएट हो चुके हैं उसके सर्वर के ऊपर। वो सारे डिटेल जैसे यहाँ पे ईमेल सर्वर जो है इसको पूरा पता रहेगा जैसे अभी हम लोग जितने यूजर के लिए ईमेल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं आई मीन जो तुम्हारा तुम्हारा जो टास्क है कॉन्फ़िगर ईमेल क्लाइंट। तो बेसिकली हर क्लाइंट के लिए एक एक ईमेल आईडी जो है हम लोग क्रिएट कर रहे हैं राइट। उसका पासवर्ड डाल रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस नेम वगैरह जो भी है डिटेल्स उसको हम फिल कर रहे हैं राइट। तो आवर जॉब इज दैट once you have created we have configured that all the email it should be there in their email server database as well. Got it? ओके सर, मतलब कि जैसे गूगल का एक सर्वर होता है ना, जीमेल का सर्वर होता है, वो सॉर्ट ऑफ सिमुलेट कर रहा है इस एक्टिविटी में। Absolutely it is like that. ओके सर, ठीक है, Yeah. थैंक यू सर। So just do it for the other client as well. This is for 1-1. Now you can move ahead with the 2-3. So 2-3 where you will get. So first to close this. This is for 1-1 PC. तो अभी हेडक्वार्टर में ही तुम लोग को अभी ढूंढना है
हमें 2-3 PC या लैपटॉप को। तो ये किधर है तुम लोग बताओ मुझे। वेयर इज इट? हेडक्वार्टर में गए। 1-1 तो इधर था। अभी 2-3 किधर होगा? सेकेंड रो, वाला, थर्ड। देखो। वाइट वाला, वाइट, वाइट ऊपर वाला। में वाइट। हाँ, ऊपर ऊपर, ऊपर से। मतलब राइट साइड में तुम बोल रहे? हाँ, उसके नीचे वाला, एग्जैक्ट जहाँ पे आप थे उसके नीचे वाला। 1 मिनट रुको। ये 1-3 है। इसके नीचे? नहीं, ऊपर। ऊपर। ओके। वाइट वाइट। हाँ। हाँ, ये वाला। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो क्लिक करो। 2-3 हो गया। Right. So we have to configure this. We can go to email server. Just to go to desktop, email. Just give the name. Name is Arjulo. What is your email ID? Just copy it. The your name. अच्छा, योर नेम में ठीक है। यूजर नेम तुम्हारा जो है ये रहेगा बी आर यूजर वन। पासवर्ड इसको डाल दो। कमिंग और इनकमिंग एंड आउटगोइंग ईमेल सर्वर, इसका डिटेल डाला। इनकमिंग आउटगोइंग में सेम ही था। इनकमिंग आउटगोइंग में हम लोग मेल साइबर एक्सपर्ट HQ@headquarter.com डाल रहे हैं हम लोग। तो ये तुमको एंटर करना पड़ेगा। जस्ट सेव दैट। जस्ट सेव दैट। This one done. mail.cyber@headquarter.com. It's done. And now we can move for the next user. ये ठीक है। अभी तुम लोग को जाना है एट हेडक्वार्टर लैपटॉप वन। HP लैपटॉप वन को ओपन करो। क्वार्टर लैपटॉप वन किधर है? इट इज मेंशन क्वार्टर लैपटॉप वन। It's, I think this one. HP laptop one. Yeah, that's fine. Now go to the email. Just enter the detail. User name. Your name is Malia. Just enter this email address. Incoming outgoing will be same. mail.cyberhq। ये वाला इसको पेस्ट करके इसे रिमूव कर दो बाकी वाले। mail.cyberhq.com and outgoing will be the same. And login information, that is username and password, that you can mention. Username is PR user 2. This one I can mention.
and password will be just go is capital. Let it be copied. Let's save this. So this one we did it for the laptop one, expert laptop one. Now net admin. Now I have to open. Then close this. So now we can close net admin. Now check that there is net admin. Net admin PC is in the wiring closet. Okay, near that the PC is in the okay. So I think here it will be somewhere near to this. Net admin PC values closet. It is Sir, inside the wiring closet. this is the net admin device. Just configure it. Go to the email. Net admin. Just write the name. That is your net admin. Just move add the next one. This is for net admin. An email address you can give this stated. Coming outgoing, just give this mail detail. You can give this username and password, this detail. Just save this. Okay, so we have done till that. We are at step number 2, part 2. That till that we have completed. Okay, so everything updated on your email server of your cyber headquarter, right? And now what you'll do, just close this. Now we have to send an email as SUK-E that was in PC11. That email you have configured for this PC 11. On PC11, click compose and compose an email Azulo
add to this, you have to just send an email like as okay. So you have to go to PC11 and go to the compose and email you have sent to BR user 1. ये email को ये तुम्हारा सेंटर का I mean receiver end का email है. So that you have to give the detail under the compose. So you can copy this, right? Enter the subject that email message of your choice and click send. And when finished, no, the packet person mentioned take several seconds to some words. Are you asking anyone anything? Did you ask anyone? Just make it if you're not asking. By mistake, sir, by mistake. Okay. So here, what you'll do, you have to just compose an email. I mean, first let's go to the PC1 में, okay? पहले PC1 में जाओ. अब किधर हम लोग को मिला था ना PC11? इधर ही कहीं था, उसको ढूंढना पड़ेगा. PC11 it was इधर का मैं बताया था. नेविगेट बैक टू PC1 which is बॉटम कॉर्नर पे है. अच्छा, ये वाला है लगता है. लेट मी चेक. बॉटम कॉर्नर किधर हो सकता है? डेस्कटॉप दिस इज नीचे वाला यहाँ पे विद दिस वन बट ब्राउन कलर का जो है उसके साइड में, राइट साइड में, राइट साइड ये वाला ही है शायद. okay this one is the PC11. Yes. So here we have to just go to the email and compose, right? And to whom we have to send? You have to send to BR user 1. So the email ID of Azulo. This is your email address. Just copy this email. Go to compose, paste it here, enter a subject and email message of your choice. उसमें लिख दो हाय और लिख दो हाय. और कौन भेज रहा है ये? Who is sending? PC11. Okay. You can write here in bracket. This is for PC11 so that you can easily identify. Good. Write anything. Okay. So this is the PC1. You're sending mail from PC1. So just click on send. देखो तुम्हारा क्या दिखा रहे सेंडिंग मेल हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, सेंड हुआ नहीं है. जब सेंड हो जाता है तो यहाँ पे सक्सेस दिखाएगा, तब थोड़ा टाइम लेगा. इट इज सेंडिंग राइट नाउ. DNS resolve IP address this server not found. Okay, so there is an error. ईमेल वगैरह तो सही था, ठीक है. इसके अगले स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहे हैं वो. You can go here, right? So they were asking about, let's see, upload an email address and enter the subject and the email message have your choice. Click send. Miss packet trace may not take several seconds to cover before sender sends success message at the bottom of this windows. Packet trace does not grade the step. Verify you correctly completed the step by receiving the email sent by the online the PC22. तो ये BR यूजर जो था वो हमारा PC22 का 23 का है. हम वहाँ पे चेक करेंगे, ईमेल रिसीव हुआ नहीं, सर, लेकिन यहाँ पर सेंड ही नहीं हुआ अभी तक. हाँ बोलो सर. आपने जो मेल जो अपना जो क्लोजेट है, वायरिंग क्लोजेट,
वहाँ पे जो मेल में गए थे वहाँ पे अपन ने एक डोमेन नेम सेट किया था ईमेल में जाके। सर उसको आपने बस लिख के छोड़ दिया, वहाँ पे उसको सेट भी करना है, इसीलिए सर्वर नॉट फाउंड आ रहा है सर। अच्छा हाँ ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से ओपन करता हूँ, जस्ट वेट। कि किसका मिस हुआ था? सबका, मतलब सारे यूजर का? नो सर, केवल आपको उसमें जाना है वायरिंग क्लोजेट में और वो मेल वाला वो खोलना है। मेल वाला तो ठीक है। व्हाट आई एम आस्किंग, इज इट फॉर ऑल यूजर, राइट? let me go to first, just wait, wiring closet, एक मिनट रुको। यस सर। ठीक है, इस किधर गया? Not going back. Then this is it. Okay, it's under the green villa. Okay, ये इसी के अंदर था, ग्रीन विला के अंदर में ही था। तो वायरिंग क्लोसेट, हाँ इसमें तुम लोग का वायरिंग क्लोसेट में सर वो ईमेल, मेल वाला मेल राइट सर्विसेज साइड। में सेट करना था। ओके, ये तो मेल वाला है तुम्हारा, ये तो नहीं, ईमेल। अच्छा, ये सब सेट नहीं किया था मैंने। हाँ सर। ओके, सर यहाँ पे जो ऊपर डोमेन नेम आ रहा है उसमें साइबर डॉट सॉरी मेल डॉट साइबर एच क्यू डॉट कॉम करके उसको सेट करना है। ये वाला स्टेप नहीं दिया था क्या, या मिस, आई हैव सर मिस्ड आपने दैट? बस लिख के छोड़ दिया था उसको, आगे सेट वाला बटन नहीं दबाया था तो वो सेट नहीं हुआ। ओके ओके, yeah, that's fine, so we will do that. Just write the domain as well. Email domain name तुम्हारा ठीक है। यस सर, अब वो सेट दबा दीजिए बस। अब मेल चला जाएगा सर। सेंड यूजर का भी सेम ही है, ये सबका सेट हो गया है तुम लगता है, बाय डिफॉल्ट ले लूँगा। एक का तो सेट किया मैंने, ये सिलेक्ट किया था, बिना सिलेक्ट किए भी आई थिंक। हाँ सर, वो सबके लिए है वो, बस। ठीक है, वो ये जनरल है, आई मीन मतलब कोई यूजर के बेसिस से नहीं है। मैंने ऐसे रेंडमली ऐसे सिलेक्ट कर दिया यूजर पे, बट आपका डोमेन सबका कॉमन है। तो यहाँ से जो डोमेन आ रहा है एक बार सेट कर दो तो सबके लिए वो होगा। एक बार मैं बैक जाके देख लेता हूँ। ठीक है, ये सेट हो गया। ओके, नाउ व्हाट विल डू, विल गो टू पीसी, ये 11 पीसी पे जाना है। इधर ही गई था 11 पीसी। हाँ, यहाँ से जाके ईमेल में जाओ, कंपोज, और किसको भेजना है? PC23 को, और जूलो को भेजना है, उसका ईमेल डाल दो। रिक्वेस्ट हेयर, सब्जेक्ट में तुम डाल सकते हो हाय। मैं इसका नाम देता हूँ 111-1, इससे पता चल जाएगा मेरे को PC1 से आया है। और आई एम गुड, जस्ट टाइप एनीथिंग, सेंड करो। चलो वेरी गुड, सक्सेस तो हो गया। एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, तो PC23 पे जाके चेक कर लो। PC23 किधर था? PC23 is the office below the conference room. So PC23 is in the office below the conference room. ये 1 2 इधर कोई वाल्ट वाला था, ये वाला। ओके, now just go to email
रिसीव में जाओ, देखो आया होगा एक मैसेज, हाँ किसी वन सर से आया। यस, टेल मी। सर मेरा वाला POP3 POP3 कुछ दिखा रहा है, लाइक एरर दिखा रहा है सर। POP3 रिसीव जब करते हैं मेल हम लोग तो वहां पे यूज करते हैं POP3 प्रोटोकॉल। सर यहाँ ठीक है, पे दिखा रहा है POP3 ऑथेंटिकेशन फेलियर, इसमें क्या करें? और उसको ये अनेबल करना था ना, पहले ही ईमेल को ये अनेबल करो। आई थिंक तुम ईमेल सर्वर को अनेबल नहीं किए, सर कैसे इसलिए वो करना है वो? रिसीव रिसीव नहीं कर रहा है। रुको रुको एक मिनट, तुम लोग इसका जो स्टार्टिंग में था ना, जस्ट वेट, फिगर तो ठीक है। डू वन थिंग, जो हमारा ये जो सर्वर है ना, नहीं नहीं इसमें नहीं, ये जो तुम्हारा मेन सर्वर जो था, ईमेल सर्वर जहाँ से कॉन्फ़िगर किए थे हम लोग, जस्ट वेट, वायरिंग क्लोसेट में जाओ, मेल सर्वर पे जाओ, ईमेल सर्विसेज में ये जो वायरिंग क्लोसेट है मेल सर्वर पे जाओ, यहाँ पे ये तुम्हारा ईमेल में जाके SMTP, SMTP एंड POP3, you have two protocol ना, सर दोनों ऑन है। just make it on, this SMTP on and POP3 should also be on. सर इट्स Just make ऑलरेडी डन सर। already done, फिर भी नहीं हाँ then it is fine ना? स्टिल इट्स नॉट रिसीविंग द मैसेज ना। Okay, okay, so you share your screen, I will check it, just सर कैन यू सी? yeah, I can see, yeah. So here, just a minute, let me make the full screen. Yeah. So go to the email server. यस सर हियर इट इज। Share your full screen. Actually, I can't. Only I can see the wiring closet only. Afterwards, I can't see anything. ओके सर मेल। Mm-hmm. It is on. Okay. यस सर। Okay. Now just go to headquarter user one. Just हेडक्वार्टर HQ यूजर user one. Yeah. दिस वन ना। Mm-hmm. 1 1 Yeah, yeah. Just go to email. या Click on email. Compose. Just type the second user ID. Just copy and paste simply. HQ. हाँ Yeah. BR user one @mail.cyberhq.com. Yes. सर सेंड सक्सेस दिखा रहा है। रिसीवर एंड में जाओ, चैट टू पे जाओ। यहाँ पे ये दिखा रहा है। ऑप ऑथेंटिकेशन। अच्छा, ये 2-3 पीसी का नहीं ये हुआ है तुम्हारा ईमेल। एक काम करो, पीसी को ऑन करो, ये पीसी में जाओ, तो क्लोज किस? करो। हाँ जस्ट वेट, you just go to physical connections. हाँ सॉरी ये कॉन्फ़िग में जाओ एक बार, इसका हाँ ईमेल में जाओ,
ईमेल इसका ईमेल नहीं दिया सेपरेटली। ओके, डू वन थिंग ना, गो टू देन डेस्कटॉप। हाँ डेस्कटॉप में ईमेल तो डायरेक्टली तुम्हारा एक्सेस दे देगा कि यहाँ से तो तुम्हारा नहीं है प्रॉब्लम। एक बार क्लिक करो तो, जस्ट क्लिक ऑन ईमेल सर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर हाँ कॉन्फ़िगर, हाँ, this is fine. Now go to the left side config, on top, no, not here, not this side, पर near to desktop is there is an option ना, tab। कॉन्फ़िग हाँ इसमें भी तुम्हारा नहीं दिया। सेटिंग में जाओ तो सेटिंग में क्या क्या ऑप्शन है, सेटिंग इधर इधर लेफ्ट साइड है, वही कॉन्फिग में ही सेटिंग में जाओ, just go कॉन्फ़िग inside। में सेटिंग्स ओके ये है DNS सर्वर है, स्टैटिक आईपी ना, ईमेल नहीं दे पा रहा। ये तो मेन सर्वर से ही सब ऑपरेट हो रहा है, उसमें अगर कॉन्फ़िगर है तो इधर कुछ करने की जरूरत नहीं था। सर पता नहीं पर क्यों नहीं हो रहा है बाकी सब हो रहा है ठीक है, एक काम करो, दूसरे पीसी को मेल करो, ये BR2 को मेल करो, ओके उसका चेक करके देखो। अरे PC1 से PC1 ओपन करो and send a mail to someone else, like BR user 2 को करो। कॉपी एंड पेस्ट बेटर। सर सेंड सक्सेस दिखा दिया हाँ चेक जाओ, करें यस, हेडक्वार्टर H2 लैपटॉप। लैपटॉप 1 ये वाला इसमें आ गया आई थिंक। बट दिखा नहीं रहा है एक सर मिनट, रिसीविंग नहीं, रिसीव मेल, मेल सक्सेस। एक बार इसका ऊपर जाओ तो, ऊपर कैसे रिसीविंग मेल फ्रॉम POP3 मेल सर्वर, DNS रिजॉल्विंग मेल ऐड करते हैं। फिर से एक बार ओपन करो तो ये तुम्हारा मेल सर्वर, मेल सर्विसेज पर ईमेल सर्विस ना, हाँ रिसीव में जाओ। शो नहीं कर रहा था, मेल आया है बट दिखा रहा है कि रिसीव दैट, सर सर रिसीव्ड मेल सक्सेस। और वो हाइड हो जा रहा है क्या? रिजल्ट्स में जाने से वो पता चल जाता है कौन सा किया है कौन सा नहीं हुआ है। कहाँ पे चेक रिजल्ट्स जो कंप्लीशन के नीचे है। ओके तो उसका दिखा रहे हैं कि बहुत सारी चीजें कॉम्प्लीटेड है। ये देखो सब लास्ट में यूजर पासवर्ड ये नहीं है। तो पासवर्ड तुम्हारा ये नहीं, यूजर पासवर्ड कुछ मिस किया क्या? ये जो क्रॉस दिखा रहे हैं, ये 2 3। नेम वाला 2 3 में हम्म, ईमेल क्लाइंट यूजर पासवर्ड तो ये इन- कहाँ से चेक करना है फिर से ये पासवर्ड तुमने स्टार्टिंग में सेट किया होगा। यहाँ से बैक ये कैसे देखते हैं इसको जाओ, इसको क्लोज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो 2 3 में मतलब स्टेप 2 3 में बोल रहा है ना 2 3 यूजर था, उसका पासवर्ड तुमने गलत डाला है। 2 3 यूजर स्टार्टिंग में तुम पासवर्ड जो डाल रही थी ना, हाँ वो चेक करो। वायरिंग क्लोजेट में जो पासवर्ड डाल रही थी हम्म तो ये यहाँ पे था 2 3, वायरिंग नीचे जाओ, नीचे जाओ। ओके ये सब पासवर्ड में बस यूजर देखो, ये जो है ना, BR user 2, हाँ यूजर 2 के लिए पासवर्ड है 1 2 3 2 3 के लिए BR user 1 है। रुको रुको, इसको 1 2 3 एक्सक्लेमेशन है, तो पूरा स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। एक मिनट, जस्ट शेयर योर स्क्रीन। ओके, आई कैन सी फुल स्क्रीन। क्या लिखा है वहां पे? सिस्को 1 2 3 डैश एक्सक्लेमेशन है, डैश है, हाँ एक्सक्लेमेशन।
2 3 में तो डैश है सर। 2 3, अच्छा यहाँ पे 2 3 यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक्सक्लेमेशन। नहीं, ये दूसरा यूजर है, ठीक है, उसको डालो, वो पासवर्ड को कैसे चेंज करके देखो। यहाँ पे ईमेल सर्वर में कॉन्फ़िगर ईमेल करना। कॉन्फ़िगर। You are in 1 1. No, don't change here. या Go to 2 3, 2 3. Yes. 2 3 कॉन्फ़िगर यूजर 2। It is showing email सक्सेस तो दिखा रहा है, तुम्हारा रिसीव हुआ है। एक बार फिर से सेंड करो, तो सेंड करके फिर एक बार रिसीव में जाके चेक करो। विजिबल नहीं हो रहा है, बट इट इज शोइंग दैट इट हैज बीन रिसीव्ड। कांट सी द मैसेज। और तुमको ही भेज रही हूँ, हाँ सर फिर से। यस। No, this is not 2. This is 2 3. I mean, you are in the आ headquarter laptop. ओके। What is 2 3 PC? Yes. सक्सेस दिखा रहा है, फिर से उधर चेक करूँ। Hmm. 2 3 2 3। अब भी तुम्हारा इशू दिखा रहा है। सर Copy 2 3 of का सर आई थिंक कॉन्फ़िगर मेल में गलत पासवर्ड डाला है। 2 3 पासवर्ड कॉन्फ़िगर चेक कर लो, तो एक बार 2 3 अभी तो कॉन्फ़िगरेशन चेक में किया। ये वाला पासवर्ड डाल, एक बार इसको हटाओ, ये वाला हटा के फिर से एक बार डाल के देखो, तो चेक करो। हाँ, ओके। ओके। इससे हाँ देखो, सब आ गए हैं तुम्हें। एवरी अच्छा। वो पासवर्ड ही तुम गलत डाल रही है, इसलिए हो रहा है सब। हाँ ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Okay guys, so you just all of you just complete the remaining part. Complete करो तुम लोग। Only few parts are only left. Just go ahead and complete it. जिन लोग का नहीं हो रहा है, स्क्रीन शेयर करो, फिर कंप्लीट करो तुम लोग। क्लास पर क्रिएट कर दे रहा हूँ, वहाँ सबमिट करना तुम लोग। This is of lab number 13.1.14. हाँ लग जाएगी, जाएगी लाइट अभी। फोन फन चार्ज कर लो अपने।
I'm giving the due date is till 7th July, so that in next class on Monday, if you have any doubts and all, so we can discuss and you can upload classwork till 7th July. So long period of time you have, you can submit it. Yeah, that's done. Let me ask to ma'am, the Varshini madam will take class or not today. Just next class, guys. We'll see you on Monday. You can submit your work. Sir? Yeah, tell me. सर एक और पार्ट में नहीं हो रहा, वो भी एक बार हेल्प कर देंगे सर? Share for screen. यस सर. सर यहाँ पे सर ये वाला पार्ट पे जब डेस्कटॉप में कमांड प्रॉम्प्ट से गेट करना होता है फाइल ए मैसेज न्यू एक्सटी वाला .txt वाला है, तो ये वाला गेट हो गया. यहाँ पे दिखा रहा है कि फाइल ट्रांसफर इन प्रोग्रेस, फिर हो गया यहाँ पे बाइट्स कॉपीड. फिर यहाँ पे हाँ, तो वहाँ पे क्विट करने के बाद क्विट कर दें. यहाँ पे क्विट लिखा पहले या क्लोज कौन कर? सा स्टेप में? No, just wait. Tell me you are in स्टेप which state? 3G. G. I am in D. Sorry, D. D. Use the get command to download. ये डाउनलोड कर ली क्या तुम? get command यूज हाँ करके? सर ये हाँ, ये हो गया. क्विट द FTP. हाँ, इसको क्विट कर दो. QUIT टाइप कर दो यहाँ से. FTP से जो प्रॉम्प्ट है वो बाहर आ जाएगा, सी क्विट में आ हो जाएगा. गया ना? हाँ. ये हो गया. अभी सर यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में जाके देखने बोल रहा है, वहां पे नहीं दे रहा है ये. So close the just wait. Close the command prompt. Click the text editor and file. ऐसे नहीं, फाइल में जाओ. फाइल में क्लिक करो. फाइल में नहीं हाँ, हो रहा है. क्लिक. नहीं, फाइल में क्लिक नहीं हो रहा है. अच्छा. क्लिक करो. ओ ओपन करो. ओके. ओपन. हाँ, मैसेज और ये टेक्स्ट वाला. जाओ. हाँ, ओके हाँ करो. आ जाएगा. यस, you successfully have access the FTP server. ठीक तो है. You got that? ओके ओके. थैंक यू सर. Yes. यही Yeah. है. Okay, so you complete it and submit in the classroom. It takes half an hour more. You can submit it once you'll complete. अभी जो स्टार्ट कर दिया है वो कंप्लीट कर लेना, नहीं तो फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ जाएगा तुम लोग को. बीच में अभी छोड़ो मत. जो शुरू कर दिया है वो कंटिन्यू करो और कंप्लीट करके अपलोड आज ही कर दो. और जो अभी तक स्टार्ट नहीं किया, अगर उसके पास 1-1.5 घंटे का टाइम है तभी स्टार्ट करना अभी से. और यू कैन स्टार्ट टुमारो आल्सो. यू कैन सबमिट इट अकॉर्डिंगली. Okay, so we'll see you in next class, guys.